नमस्कार मु आपको स्वागत करुच्ची अड्डा 24/7 ओपीएससी चैनल रे थंबनेल रे आपण देखि पारुथबे ओपीएससी ओसीएस प्रीलिम्स 2024 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पई 20 बेस्ट क्वेश्चंस देखिबा जो 20 क्वेश्चंस पर्टिकुलरली ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जोटा कि जस्ट आपण देखिबे जो समय रे मुगल एरा सरुथला एवं ब्रिटिश एंट्री करूथले पर्टिकुलरली सेही पर्टिकुलर पीरियड टाइम पीरियड रो किछि क्वेश्चन आमे देखिबा 20 एमसीक्यूज या पूर्व भी किछि क्वेश्चन आनी के आसीथली या पर भी मु आनी के आसीबी कारण मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री गोटे जिंस जोटा कि हम चैनल रे पर्टिकुलरली देखिबे जदि आपण मंजिल सीरीज रे टिके नेग्लेक्ट होउथला त मु चिंता कली किछि एमसीक्यूज मध्ये आपण को दवा पई तो चलंतु डिस्कस करिबा आज रो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन गुडी को ता पूर्व मु कहि रखे जो माने आमर लगातार भाव में देखुचंती चैनल को फॉलो करूचंती एवं आमे चेष्टा करूचु कि आपनक पाखरे पहुंचेबा पई सब टॉपिक्स को सब सब्जेक्ट को प्रीलिम्स पूर्व जमती मल्टीपल टाइम्स आपनक रिवीजन हे जीवो तेणु देखंतु अब्दुल कलाम कर गोटे कोटेशन मोटिवेशनल कोट देखिबा वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफीट अस तार सारांश कौन सारांश होची प्रॉब्लम पाई आमे काफी एक्सक्यूज हम पाखरे थाए कि मोर एटा प्रॉब्लम हला सेटा प्रॉब्लम हला जा फल रे हमर जो ड्रीम थाए हमर जो पर्पस थाए हमें जो ऑब्जेक्टिविटी थाए सेटा कोठी ना कोठी सबसाइड हे जाए एवं प्रॉब्लम सरफेस को आसे प्रॉब्लम सेटा को डोमिनेट करे तेणु चेष्टा करिबा प्रॉब्लम को आमे डिफीट करिबा रादर प्रॉब्लम विल डिफीट अस तेणु ये हूँ सारा मर्म जोटा हम कहते हैं एसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोटेशन मॉडर्न इंडिया 20 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 1 आवर सेशन रहइबो लेस देन 1 आवर भी कहि परिबे चलंतु स्टार्ट करिबा डिस्कशन फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन अछि आपन को डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मु देई देबी सो दैट आपन ताकू रिवाइज भी करि परिबे पीडीएफ नै The factors that led Europeans to the quest for a sea route to India. कारण यूरोपियंस माने सी रूट डिस्कवर कले सी रूट डिस्कवर कला परे से माने एंट्री कले इंडिया को एवं इंडिया रो जो रिच रिसोर्सेस से माने देखिले बिकॉज इंडिया वाज नोन एज द गोल्डन स्पैरो मन रखथिबे माने जानिथिबे आपण सोने की चिड़िया जहा को कहा जाउतला गोल्डन स्पैरो ओनली ड्यू टू प्रॉस्पेरिटी द वेल्थ दैट इंडिया हैड First statement देखो Arab domination of land and sea routes made it difficult for Europeans to establish direct contact with India, which is absolutely correct. Absolutely correct. कारण जेहेतु लैंड उपरे अरब वर्ल्ड रो डोमिनेशन थिला या सी रूट्स रे भी डोमिनेशन थिला सितपे आपण देखिबे से माने जो सी रूट डिस्कवर हैला कोलंबस भास्को डा गामा माने सब धीरे धीरे सी रूट को डिस्कवर कले एवं से माने केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीकन कोस्ट अछि सदर्न पॉइंट ऑफ द अफ्रीकन कोस्ट सेठी आपण एंट्री करी कि से माने तापरे इंडिया को आस्थले केप ऑफ गुड होप देखि तेनु पर्टिकुलरली difficult for the Europeans to establish direct contact with India definitely सेटा आपण ताकू कहि परिबे करेक्ट स्टेटमेंट एटा होची करेक्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन भी देखिबा हमें सेकंड से कहूची ड्यूरिंग द रेनेसा the economic development of many regions of European was declining rapidly making it difficult for Europeans to purchase oriental goods at higher prices. Renaissance means rebirth in terms of society, in terms of political affairs, in terms of economic affairs. रेनेसा हबा परे साइंटिफिक डिस्कवरी अपन को देखिबा को मिलिबो एवं इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी रैपिड स्पीड रे बड़ी चलला कारण रेनेसा गेव बर्थ टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एज वेल जोटा कि ब्रिटेन रे स्टार्ट हितला तेणु ये स्टेटमेंट इटसेल्फ is an incorrect one. ये incorrect statement. Correct statement होची one. That is the first. Answer होची one only A. यार explanation भी slightly देखिबा and then second question को move करिबा. Explanation कौन देखो 1453 Constantinople fell to the Ottoman Turks who were on the ascendant. Merchandise from India went to the European markets.
through Arab Muslims intermediaries. The Red Sea trade route was a state monopoly from which Islamic rulers. ବର୍ତ୍ତମାନ जो Red Sea ଆପଣ route ଦେଖିବେ जोटा कि यूरोपियन अरबियन सी तापर से जो पानामा कैनाल दे कि जो यूरोप को कनेक्ट करूची सेटा इस्लामिक रूलर्स इस्लामिक वर्ल्ड रो ही डोमिनेशन सेठी थिला जोथि पई कि यूरोपियंस माने डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश करि पारु नथिले ठीक अछि तनु ये करेक्ट थिला ऑटोमन टर्क्स को आपण देखिथिबे जो खिलाफत मूवमेंट हितला सही समय रे इनफैक्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समय रे ऑटोमन टर्क्स को डिफीट करथिला कि ब्रिटेन ठीक अच्छे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट कहीं मुझे आपको कहली साइंटिफिक डिस्कवरी है मशीन एस्टाब्लिश करागला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आसला प्रॉस्पेरिटी एंड रिचनेस आसला सोसाइटी रे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिला यार आंसर कौन देखिबा आंसर कौन एक्सप्लेनेशन कौन देखिबा First statement देखो under the treaty the rulers of Portugal and Spain divided the non-Christian world between them by an imaginary line in the Atlantic second से कहूची under the treaty Portugal could claim and occupy everything to the west of the line while Spain could claim everything to the east ठीक अछि यार explanation देखिबा देखो 1907 रे अंडर द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास so take 1494 the rulers of Portugal and Spain divided the non-Christian world between them by an imaginary line in the Atlantic जोटा कि 1300 miles west to the Cape Verde island तो गोटे इमेजिनरी लाइन गोटे डिवाइड करागला एवं नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को डिवाइड करागला ये होची ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास रो एज पर द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिला सेकंड से इनकरेक्ट कहूची काहेकि ना अंडर द ट्रीटी पोर्तुगल कुड क्लेम एंड ऑक्युपाई एवरीथिंग टू द ईस्ट ऑफ द लाइन व्हाइल स्पेन कुड क्लेम एवरीथिंग टू द वेस्ट बुझियो जे जिंसटा कारण स्पेन could claim everything to the east but इठी आपण देखिबे स्पेन वेस्ट को क्लेम कला एवं पोर्तुगल ईस्ट को क्लेम कला जस्ट रिवर्स सेटमेंट को इनकरेक्ट बोली कहा जाउची ठीक अछि सो आंसर इज व्हाट ए नेक्स्ट देखिबा ब्लू वाटर पॉलिसी वाज द विजन ऑफ व्हाट ब्लू वाटर पॉलिसी जदि आपण देखिबे ये विजन कहार थिला पर्टिकुलरली पोर्तुगीज रे जे रूलर थिले फ्रांसिस्को दे अल्मेडिया ये अल्मेडांकर विजन थिला पोर्तुगीज रो कि इंडियन ओशन ऊपर इसलिए सेति पई से माने ना देइचंदी ब्लू वाटर पॉलिसी इंडियन ओशन ऊपर डोमिनेंट या कंट्रोल रखिबा पई नेक्स्ट देखि परिबेठु Almeida's vision was to make Portuguese the master of Indian Ocean. He opposed establishing a territorial empire in India, wanted to the Portuguese should maintain supremacy on the sea, confine their activities purely commercial transactions, and this policy was known as the Blue Water Policy. The Blue Water Policy was reversed by the Alfonso de Albuquerque. So particularly इंडियन ओशन ऊपर डोमिनेंसी से माने रखिबा को चाहुतले पोर्तुगीज वाला देखो तो फारुखसियर फरमान ऊपर डिस्कशन हमें ठीक देखिबा फारुखसियर फरमान ऊपर डिस्कशन एटी देखिबा हमें फारुखसियर फरमान होची सिंपली जो दस्तक जहा को हमें कहू या पर्टिकुलरली जोटा कि परमिशन मिलिथिला काहा को ब्रिटिश मानन को परमिशन दिया जाइथिला दस्तक मिलिथिला सो दैट दे कैन हैव ए ट्रेड विथ इंडिया कारण मेजरली तो से ट्रेड करिबा पई ही आसीथिले पर धीरे धीरे देखिले कैप्चर करिबा स्टार्ट कले देखिबा फारुखसियर्स फरमान कोन The East India Company's import and exports were exempted from additional custom duties, excepting the annual payment of 3,000 rupees in Bengal, Bihar and Odisha. बुझियो जिनसेटा
स्टेटमेंट को आउ थे देखिबा द ईस्ट इंडिया कंपनीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एडिशनल कस्टम ड्यूटीज एक्सेप्टिंग द एनुअल पेमेंट ऑफ 3000 रुपीस इन बंगाल बिहार एंड ओडिशा ये हूँ फर्स्ट स्टेटमेंट एवं फर्स्ट स्टेटमेंट जदि आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हूँ इनकरेक्ट कहीं ना बेंगल रे जनरली आप देखिए बेंगल रे सेटा को एग्जेम्प्ट करा जाइथिला ठीक अछि बेंगल रे ही एग्जेम्प्ट करा जाइथिला देखिबा आगु को द कंपनी वाज परमिटेड टू इश्यू दस्तक ई दस्तक होची से ट्रेड रो परमिशन जोटा को दस्तक बोली कुआ जाय ट्रेड रो परमिशन थर्ड देखंतु इट वाज डिक्रीड दैट कॉइन्स ऑफ द कंपनी मिंटेड एट बॉम्बे वर टू हैव करेंसी थ्रू आउट इंडिया ठीक अछि तो एक्सप्लेनेशन देखिबा यार कोन 1715 रे आपण देखंतु इंग्लिश मिशन लेड बाय जॉन सरमन to the court of Mughal Emperor Farrukhsiyar secured three famous Farrukhsiyar Farman, giving the company many valuable privileges in Bengal, Gujarat and Hyderabad. इठी आपण देखुछनी कोन बेंगल बिहार एंड ओडिशा बट से मिलिथला कोड तांको बेंगल गुजरात एंड हैदराबाद. The Farmans thus obtained were regarded as the Magna Carta of the company. That means permission to have trade. Their important terms were Bengal. The company's import and export were exempted from additional custom duties, excepting the annual payment of 3000 rupees. 3000 rupees व्यतीत कोनोसी प्रकार additional duties ता ऊपर impose करा जिवो नाही. Exempted from additional excepting the annual payment of 3000 rupees in Bengal, Bihar and Odisha देइछि. But एठी होछि simply मु जेमति कहली आपनको Bengal विषय रे. The company was permitted to issue dastak or passes for the transportation of such goods. सिर्फ second statement होछि correct. ठीक अछि. The company was permitted to rent more lands around Calcutta. In Hyderabad, the company retained its existing privilege of freedom from duties in trade and had to pay the prevailing rent only for Madras. Surat re dekhundu annual payment of 10,000 rupees. East India Company was exempted from the levy of all duties. It was decreed that the coins of the company minted at Bombay were to have currency throughout the Mughal Empire. Hence, statement 3 is wrong. Mughal Empire. ठीक है जी. थ्रू आउट इंडिया से देइछि बट केवल मुगल एम्पायर जोटी थिला सेही जगह रे ही सेटा को प्रचलन करा गला. मुगल एम्पायर जनरली आपण देखिबे नॉर्दर्न साइड रे जनरली आपण को देखिबा को मिलिबो. सिट पई 2 ओनली इज द करेक्ट. 2 ओनली इज द आंसर. नेक्स्ट consider the following statements about the first Carnatic War. First statement देखो, the first Carnatic War was an extension of the Anglo-French War. Anglo-French War in Europe, which was caused by the Austrian War of Succession. Anglo-French War. First Carnatic War जदि आपण देखिबे केबे हितला 1740 to 48. 1740 to 48. Second देखंतु, the first Carnatic War ended with the signing of the Treaty of Peace of Paris, bringing the Austrian War of Succession to a conclusion. ठीक अछि. तो एक्सप्लेनेशन यार देखिबा. आंसर होउछि आपण देखंतु फर्स्ट होउछि आंसर यानी कि 1 ओनली आपनकर आंसर. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. was an extension of the Anglo-French War in Europe, which was caused by the Austrian War of Succession. Carnatic War time period देखो 40 to 48 given by the Europeans to the Coromandel coast and its hinterland. The first Carnatic War was an extension of the Anglo-French War in Europe, which was caused by the Austrian War of Succession. Statement 1 is correct. Second देखो, the first Carnatic War ended in 1748 and the Treaty of Aix-la-Chapelle was signed, bringing the Austrian War of Succession to a conclusion. ठीक है जी. तो एठी होची ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस से देइछि बट एटा होची ट्रीटी ऑफ Aix-la-Chapelle. Under the terms of this treaty, Madras was handed back to the English and the French in turn got their
territories in the northern America. ठीक अछि. So 2 is incorrect. Answer होजी A. Next. Next answer देखिवा. Next question देखिवा. Consider the following statements. The first battle of Panipat in 1526 was between Babur and Hemu. प्रथम बैटल ऑफ पानीपत जो आपनकर हेतिला कहा मध्यरे हेतिला बाबर एंड हेमू से कहूची. बट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा भीतर हेतिला 1526 रे बाबर एंड इब्राहिम लोधी. इब्राहिम लोधी एटा को मन रखथिबे. इब्राहिम लोधी. सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन द अकबर एंड हेमू. सेकंड हेतिला Akbar and Hemu. And third battle of Panipat between the Marathas and Ahmad Shah Abdali. एवं मराठा जो पावर थिला एंड हितला. मराठा रूल जो थिला या मराठा ambition जो थिला कि to rule over India that was ended. So third statement is the correct. C is the correct answer. एटा को रिवर्स कर देले आंसर आपन को मिल जिवो. बाबर एंड इब्राहिम लोधी देखि परिबे 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 अकबर हेमू एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 मराठास एंड अहमद शाह अब्दली. नेक्स्ट. Consider the following statements. The successor states were the states set up by the rebels against the Mughal Empire. सक्सेसर स्टेट्स बोली कहा जाउची कोन ना मुगल एम्पायर अगेंस्ट रेबल मानक द्वारा सेटअप करा जाइतला. फर्स्ट स्टेटमेंट कहूची. सेकंड कोन कहूची द न्यू स्टेट्स वर द मुगल प्रोविंसेस दैट टर्न्ड इनटू स्टेट्स आफ्टर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द एम्पायर without challenging the sovereignty of the Mughal ruler and remaining virtually independent. Third kon kuchi independent kingdoms were those states that came into existence primarily due to destabilization of the Mughal control over the provinces. These states is statement bhitor कोटा correct. Particularly जति आपण देखिबे Mughal empire धीरे धीरे तळे कंट्रोल ता हातरू कंट्रोल और रहिला नाही जेतबळे डिस्टेबलाइज हवा स्टार्ट कला तो सेतबळे आपण देखिबे जो सक्सेसर स्टेट्स वर द स्टेट्स सेट अप बाय द रेबल्स अगेंस्ट द मुगल एम्पायर. दैट इज नॉट द केस. रेबल जो माने थिले से माने स्टेट जे गोटे सेटअप करथिले सेमति नुहे कि या किंबा जदि आपण देखिए न्यू स्टेट्स वर द मुगल प्रोविंसेस दैट टर्न्ड इनटू स्टेट्स आफ्टर ब्रेकिंग अवे. दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल. ब्रेकिंग अवे एम्पायर टू ब्रेक अवे करिवे एवं विदाउट चैलेंजिंग द सॉवरेनिटी ऑफ द मुगल रूलर. Independent kingdoms were those states that came into existence primarily due to destabilization of the Mughal control over the provinces. जेतु से माने कंट्रोल करि पारले नाही एमाने कोन कले सेठू अलगा हे गेले डिस्टेबलाइज होबा स्टार्ट हला. जेमति मु बहुत थरा आपण कहि छी आपण देखिथिबे 1707 होजी आपनकर जोटे की लास्ट माने 1707 रे डेथ हला कहारो औरंगजेब करो एंड दिस वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर बोली आपण कहि परिबे. आफ्टर दैट जे भी आसिले मुगल रूलर दे वर समथिंग वेरी काइंड ऑफ सते एफिशिएंट नथिले. राइट. तनु एठी आंसर होची कोन B3 ओनली. नेक्स्ट देखिबा. देखि परिबे एक्सप्लेनेशन. These were Mughal provinces that turned into states breaking away from the empire. Though they did not challenge the sovereignty of the Mughal ruler, the establishment of virtually independent hereditary authority by their governors showed the emergence of autonomous polity in these territories. Examples are Awadh, Bengal, Hyderabad. तो एमाने कौन पाई बाहरी असले कि destabilize हला. They did not challenge. The states came into existence primarily due to destabilization of the Mughal control over the provinces. Examples being Mysore and Rajput states. New states, these were states were set up by the rebels against the Mughal Empire. Examples being Maratha, the Sikh and Jat states.
ठीक अछि तो एठी आपन को डेफिनेशन देखिबा को पड़िबो सक्सेसर स्टेट कोटा को कहा जाए न्यू स्टेट कोटा को कहा जाए एवं इंडिपेंडेंट किंगडम कहा को कहा जाए इंडिपेंडेंट किंगडम ठीक अछि न्यू स्टेट होची स्टेट सेटअप बाय द रेबल अगेंस्ट द मुगल एम्परर सेटा को न्यू स्टेट कहा जाए सक्सेसर स्टेट होची एटा मुगल प्रोविंसेस दैट टर्न्ड इनटू स्टेट्स आफ्टर ब्रेकिंग अवे from the empire without challenging the sovereignty of the Mughal ruler. That one is simply the reverse. Answer हमें देख ले B हो जाए आंसर नेक्स्ट देखिबा कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स मराठा फैमिली एंड एसोसिएटेड रीजन कहना मराठा आपण जानिथिबे कन्फेडरेशन थिला कन्फेडरेशन देखिबा करेक्टली मैच्ड कोटा गायकवाड़ होची आपणकर बरोदा गायकवाड़ होची आपणकर कोन ना बरोदा नागपुर नहे बरोदा भोंसले नागपुर ठीक अछि भोंसले होचनी नागपुर होलकर इंदौर होलकर होचनी आपणकर इंदौर सिंधिया ग्वालियर जो वर्तमान आपण देखिए जो सिंधिया फैमिली जो आपणकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अछनी एंड देन पेशवा पूना करेक्टली मैच देछि यदि करेक्टली मैच देखिबे तबे आंसर हमर कोन बाहरिबो ओनली टू पेयर्स कहीं ना एठी थर्ड एंड फोर्थ ये दुईटी केवल करेक्ट बाकी होछि तीनटा इनकरेक्ट ठीक अछि आंसर होछि बी एठी आपण देखि परिबे गायकवाड़ बरोदा भोंसले नागपुर होलकर इंदौर सिंधियास ग्वालियर एंड पेशवा पूना next with reference to the British administrative policy during the late 18th century the late 19th century consider the following statements Warren Hastings followed a policy of ring fence which aimed at creating buffer zones to defend company's frontier ring fence ठीक अछि second से कहूची the subsidiary alliance system was used by the Lord Wellesley which allowed the permanent stationing of a British force within the territory of an allying Indian ruler to pay a subsidy for its maintenance. Under the doctrine of lapse policy followed by the Lord Dalhousie, the adopted son could be hired to his foster father's private property but not the state. It was for the paramount power to decide whether to bestow the state on the adopted son or to annex it. रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग को द्वारा इंप्लीमेंट करा जायतिला गोटे बफर जोन क्रिएट करिवा पई सो दैट कंपनी को डायरेक्ट अटैक रो बंचेबा पई सब्सिडियरी अलायंस रे आपण जानिथिबे सब्सिडियरी अलायंस रे प्रथम तो से माने धमकेले डरेले तापर गोटे आर्मी को स्टेशन कले कोठी स्टेट्स रे से आर्मी को स्टेशन करिवार पर्पस कोन थिला आर्मी को स्टेशन करिवार पर्पस थिला कि खर्च स्टेट या से प्रोविंस जो अच्छी सी ही बहन करिवो बट यूरोप रो पावर यानी कि ब्रिटेन रो आर्मी सेठी रहिवो सेकंड होची कोन ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी फॉलोड बाय द लॉर्ड डेलहाउसी द अडॉप्टेड सन कुड बी द हायर टू हिज फोस्टर प्राइवेट प्रॉपर्टी रो ओनर से ही परिवो बट स्टेट डेफिनेटली ता पाखर रहिवो नाही तनु बायोलॉजिकल हवा निहांती दरकार ठीक अछि बायोलॉजिकल हवा निहांती दरकार सो आंसर होची डी 1 2 1 3 देखि परिबा आपण एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट देखिबा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डेलहाउसी which of the following pair is correctly matched is first देखंतु बैटल ऑफ बक्सार 1764 बैटल ऑफ बक्सार 1764 जाफर वर्सेस क्लाइव से दीची जाफर वर्सेस क्लाइव से दीची बट एग्जैक्टली कहा ये रही थिला ना इंग्लिश तो थिले बट
जाफर को जगह थिले किए मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू। ठीक अच्छे, सुजाउद्दौला, मीर कासिम एंड शाह आलम टू, ये थिले बैटल ऑफ बक्सार। बैटल ऑफ वांडी वॉर्स जो अच्छी, बैटल ऑफ वांडी वॉर्स सेटा फ्रेंच आउ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भितर लड़ाई होता कि किए इंडिया ऊपर रूल करिबा। आपण जानिथिबे यूरोपियन कंपटीशन होता, पोर्तुगीज हो, फ्रेंच हो, डच हो, ए माने कंपीट करथिले। तेणु से किसी कॉलोनीज देखिए जमती गोवा पोर्तुगीज रो कॉलोनी सेटा। तेणु से कंपटीशन जतले हेतला अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करथिला फॉर द नेक्स्ट 200 इयर्स। तेणु बैटल ऑफ वांडी वॉर्स होची करेक्ट पेयर अच्छी। बैटल ऑफ चिलियन वाला को जनरली आपण देखिबे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर समय रे एटा को लड़ा जाइतिला, एंग्लो सिख वॉर समय रे। ठीक अछि, थर्ड टा जो सॉरी फोर्थ टा आपण देखिबे बैटल ऑफ खरदा। बैटल ऑफ खरदा हेतिला निजाम एंड मराठा, निजाम एंड मराठा, नॉट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक अछि, देखिबा एक्सप्लेनेशन। आंसर होची बी, वांडी वॉर्स फ्रेंच वर फाइनली डिफीटेड बाय द इंग्लिश। बक्सर मुनरो थिले ईस्ट इंडिया कंपनी तरफरु, किए ऑपोजिशन ने थिले मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम टू। बैटल ऑफ चिलियन वाला वाज फॉट इन जनवरी 1849 ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिख। बैटल ऑफ खरदा took place in 1795 between the Nizam and Maratha. Who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrels? यानी कि इंडियन प्रिंसेस मान भितर टेरिटोरी को लेकिन जो लड़ाई होता ता भितर मेडिएटर करिकी जीतिबा या हातेइबा जोटा कुहा जाए, लैंड हातेइबा से काम स्टार्ट करथिले डुप्ले। रॉबर्ट क्लार्क ताको जेनिथ रे पहुंचीथिले, स्टार्ट करथिले ड्यूप्ले, जेनिथ इट वाज रीच टू इट्स जेनिथ कहा द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। Dupleix succeeded Dumas as the French governor of the Pondicherry. His ambition was to acquire for France vast territories in India. For this purpose, he entered into relation with the native princes, adopted his style of oriental splendor in his dress and surroundings. He built an army of native troops called sepoys who were trained in infantrymen in his services. That also included the famous Hyder Ali of Mysore. कारण फ्रेंच से समय भी काफी पावरफुल थिला। सो आंसर होची आपनकर बी। नेक्स्ट देखिबा, कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स of the British rule in India. The correct chronological order in which they were annexed by the British. ठीक अछि, देखिबा को स्टेट अच्छी, झांसी अच्छी, संबलपुर अच्छी, सतारा अच्छी। झांसी, संबलपुर, सतारा। झांसी के हला 1854 झांसी and 1854 on the doctrine of lapse, Dalhousie, doctrine of lapse, Dalhousie। सेकेंड जदि आपण देखिबे संबलपुर 1849, संबलपुर जब देखिए 1849 अगेन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सतारा जदि आपण देखिए सतारा होची 1848 अगेन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो फर्स्ट होची 1848, सेकंड 1849 and third 1854। 3 to 1 C is the correct answer। ठीक अछि, the princely states were annexed by the Lord Dalhousie under the doctrine of lapse, जोटे कि लीगल हायर निहाती दरकार। जमती झांसी हमें या पूर्व भी डिस्कस करूथले झांसी। तो झांसी
1854, Sambalpur 1849, Satara 1848. It was a matter of chance that during Lord Dalhousie term, many rulers of the states died without a male hire या male biological son आपण कहि परिबे. 7 states were annexed under the doctrine of lapse. The most important were the Satara 1848, Jhansi and Nagpur 1854. The other small states include Jaipur, Bundelkhand, Sambalpur, Odisha, and Bhagat in Himachal Pradesh. 1856, after deposing Nawab Wajid Ali Shah on the grounds of misgovernment, अवध को मिसगवर्नेंस ग्राउंड रे ही कैप्चर करा जाइतला जोटा कि क्रिटिसाइज भी काफी करा जाइतला. Dalhousie annexed 8 states during the 8-year tenure 1848 to 56 as the Governor General. In these 8 years, he annexed some 250,000 square miles of the territory of India. His reign almost completed the process of expansion of British power in India, which began with the victory over Sirajuddaulah in the Plassey in 1757. Next question देखिए. The officials of the company made rampant misuse of its trade privileges that adversely affected the finances of the Nawab of Bengal. Absolutely correct. कारण जो दस्तक या जो पास दिया जाइथिला सेटा ऑफिशियली कंपनी को दिया जाइथिला, राइट. बट ताकू पर्सनल कैपेसिटी रे भी कंपनी रो ऑफिशियल्स माने भी ट्रेड करिवा स्टार्ट कले, यूज करिवा स्टार्ट कले. दैट मीन्स इट वाज ए लॉस टू द एक्सचेकर ड्यूरिंग दैट टाइम एंड एक्सचेकर ऑफ द बंगाल, जोथि पई कि नवाब ऑफ बंगाल वाज नॉट हैप्पी विथ दैट एंड सेटा को दस्तक को विड्रॉ करिवा पई चेष्टा करूथले. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. The workers of the company stopped paying the taxes. Of course, दस्तक माने फ्री ट्रेड आपण कोइ पर आपण ऊपर ट्रेड पई कोनोसे टैक्स लगा जिबो नाही. सेटा केवल से प्रिविलेज कंपनी को दिया गला. पर्सनल कैपेसिटी रे प्राइवेट बिजनेस या प्राइवेट ट्रेड कले आपण को टैक्स टी दबा को पड़िबो. तेनु वर्कर्स ऑफ द कंपनी stopped paying tax under this particular दस्तक इशू. दस्तक इशू रे से माने टैक्स दबा बंद करी देले. The English fortified Calcutta without Nawab's permission. Again, that is also correct. जोथि पई कि आपनकर नवाब जे थिले कैलकाटा रो से मार्च करथिले. Fortified Calcutta without Nawab's permission. Right? तो आंसर obviously D 1, 2 and 3. The Battle of Plassey 1757. The Battle of Plassey was a decisive victory of the British East India Company over the Nawab of Bengal and his French allies in 23rd June 1757. The officials of the company made rampant misuse of the trade privileges. First statement is incorrect. Stopped paying taxes, right? And the company further tried to mislead him and compounded their sin by giving asylum to a political fugitive, Krishna Das. And rest upon the when Siraj attacked and seized the English fort at Calcutta, he brought their hostility into the open. So particularly सेटा को fortified करिवा पे लागिथिले, यानी कि से धीरे धीरे से मानकर फैक्ट्री सब जिनसो सेटअप करूथिले कैलकाटा रे. नेक्स्ट देखिबा. Arrange the following in chronological order. Chronological order. First, Anglo-Burmese War. Second, First Anglo-Afghan War. Third, First Anglo-Maratha War. Fourth, First Anglo-Mysore War. Select the correct code from below. First Anglo-Burmese War जोटा अछि सेटा होछि 1824 रु 26. Anglo-Burmese. Anglo-Afghan War जदि देखिबे 1838 रु 42. Anglo-Maratha War जदि आपण देखिबे 1775 रु 82. And Mysore War जदि आपण देखिबे 67 रु 69. तेणु यार क्रोनोलॉजी जदि आपण देखिबे आंसर होछि आपनकर कोन फर्स्ट 4 आसीबो तापर 3
तापर 1 तापर 2 आंसर होची बी ठीक अछि नेक्स्ट द ट्रीटी ऑफ यान्डाबो या यान्डाबो आपण कहि परन यान्डाबो भी कहि परन द ट्रीटी ऑफ यान्डाबो related to what related to first Anglo-Burmese war related to first Anglo-Burmese war the treaty of Yandabo or the Yandabu accord was the peace treaty that resulted in the end of the first Anglo-Burmese war this treaty was signed on the February 24th 1826 after 2 years of the war between the British and Burmese. It led to the annexation of Assam in British India. This treaty ended not only on the most expensive war of the British in India territory but also led to the end of independence of Burmese in due course. तो particularly ये जो treaty ହେଇଥିଲା Anglo-Burmese treaty Burma एवं British सहित लड़ाई ହେଇଥିଲା एवं it led to the annexation of Assam in the British India. ठीक अछि तो आंसर जदि आपण देखुचंदी सो पर्टिकुलरली Anglo-Burmese war होची आंसर Treaty of Yandabo. Next देखिवा consider the following statements. The importance of this battle lay in the fact that not only the Nawab of Bengal but also the Mughal Emperor of India was defeated by the English. The victory made the English a great power in the northern India and contended for the supremacy over the whole country. This battle laid the real foundation of the English power. Above are the reference into which of the following. So, Battle of Plassey. Battle of Plassey जदि A option अछि. Battle of Plassey was not a war. It was simply a kind of conspiracy भी आपण कहि परियो कारण एमानक तरफरु मिर्जाफर लढी नथिले तो it was a kind of surrender type थिला तो it was not a war तो Battle of Plassey तो नुहे. सेकंड जो आपण एटे देखिबे से कोन कहउछि एक तो रियल फाउंडेशन कहउछि से सेकेंड होल कंट्री ऊपर कंट्रोल आनिबो कंटेंडर बनेला कहा को इंग्लिश को एंड सेठी इन्वॉल्व की थिले एम्परर ऑफ इंडिया मुगल एम्परर जो सुजाउद्दौला सेठी भी इन्वॉल्व थिले तो ये होची बैटल ऑफ बक्सार 1764 बैटल ऑफ बक्सार एटा को हमें कहि परिबा देखो तो कंबाइंड आर्मी थिला मीर कासिम नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम मीर कासिम नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम ठीक अछि तो ये थिले आपनकर बैटल ऑफ बक्सार रे अपर पक्ष रे की थिले मुनरो आंसर होची आपनकर बैटल ऑफ बक्सार बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो He organized his army on the European model with Persian words of command. He is credited the pioneer of rocket technology in India. Third, he gave his support to the French soldiers in his kingdom in setting of Jacobean Club and planted the tree of liberty. Jacobean Club and tree of liberty ru apno sense kari paribe. The above statements depict which of the following prominent figure किए टीपू सुल्तान जाकोबियन क्लब एंड ट्री ऑफ लिबर्टी तांको पाखरे नावी भी थिला से समय रे was born in 1750 Tipu Sultan Hyder Ali and Fatima well educated man he could freely converse in Arabic Persian so multi language जना थिला से मन को great warrior tiger of Mysore को आ जाउथला right and he organized his army on the European model with Persian words of command. Right? He took the help of French officers to train his soldier. He never allowed them to develop into a pressure group. Like his father, Tipu realized the importance of naval forces. So, Navy भी समान को पाकरे थिला टीपू सुल्तान को पाकरे. 3 dockyards were established at Mangalore, Wajidabad, and Molidabad. However, his plans did not fructify. Tipu was a pattern of science and technology. He is credited the pioneer of rocket technology in India. Rocket technology. Tipu was a great lover of democracy and great diplomat. He gave his support to the French soldiers
at Seringapatam in setting of a Jacobean club in 1797. He ordered a salute 2300 cannons and 500 rockets to celebrate the occasion. Tipu himself became a member of the Jacobean club and allowed himself to be called Citizen Tipu. He planted the tree of liberty at Seringapatam. Next, the Governor General who followed a spirited forward policy towards the Afghanistan. Forward policy towards the Afghanistan. Answer होची आपनकर कोन ना Lytton. Forward policy मन रखते forward policy Lytton. Under the viceroyalty of Lord Lytton was set of foreign policies applicable to territorial ambition and disputes. An emphasis was placed on securing control of targeted territories by invasion and accession or by the political creation of compliant buffer states. Right? So, forward policy in the sense कि generally यदि आप देखिए जो territorial ambitions थिला and dispute थिला was placed on securing control of targeted territories by invasion and annexation or by the political creation of compliant buffer states. तेणु से इन्वेजन हो या कॉन्स्पिरेसी हो बफर स्टेट माध्यम हो से कौन करथिले ताकू कैप्चर करबा पे चाहुथिले एवं पर्टिकुलरली जदि आपण देखिबे इट बिकेम द स्टैंडर्ड पॉलिसी ड्यूरिंग द ग्रेट गेम ए पीरियड वेयर रशिया एंड ब्रिटिश एम्पायर बोथ ट्राइड टू कंट्रोल अफगानिस्तान either through militarily or political means. Lytton was criticized for his aggressive pursuit of this policy as it put economic pressure on the British India. So that is forward policy हिसाब रे ताकू जना जाए. Next question देखिबा. Who among the following Indian rulers established embassies in the foreign countries in the modern lines? Easy answer already हमें discuss करिचे. गोटी थिले leader Tipu Sultan established embassies in the foreign countries, particularly France, Turkey, Egypt in the modern lines. Which one of the following is correct chronological order? Correct chronological order. Battles fought in India in 18th century. 18th century. Correct chronological order. ठीक अछि. First देखिबा. First होची Battle of Amber 1749. Battle of Amber 1749. Battle of Plassey 1757. Battle of Odisha 1760 and Buxar 1764. तो ये होची आपनकर करेक्ट सीक्वेंस और chronological order 49, 57, 60 and 64. So answer is B. ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ explanation. ଯୋଉମାନେ ଲାଇଭ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି Warrior 2.0 31st October ରୁ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି एंड दिवाली सेल भी अच्छी दिवाली ऑफर अच्छी सिंपल आपन कौन करबा को पड़िबो कोड यूज करबा को पड़िबो Y962 मन रखते बेटा को Y962 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट Y962 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट वॉरियर बैच ठीक अछि कंप्लीट सिलेबस आपन रेडी डिस्कस सब रेस्ट लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब मध्य करिवे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग सो सी यू सून in another video. Thank you.